गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं डॉक्टर कमल मौर्य जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। डॉक्टर कमल मौर्य is chartered accountant by profession and who is active practice for more than 17 years. He is the senior partner and branch in charge of KRP Associates Chartered Accountants and is associated with the firm since 2009. He has exposure in handling audit assignments in various PSUs, bank, insurance companies, government organizations, and internal audit of large companies. He has completed various courses conducted by ICAI, DISA, DIRM, Indian AS, Forensic Audit, and Fraud Prevention, Business Responsibility and Sustainability Reporting, GST, and Concurrent Audit of Banks. शायद सर ने कुछ छोड़ा है, कुछ बचा ही नहीं है। इंस्टीट्यूट जो भी करा रही है सबका कंप्लीट है। न्यू एज ऑडिटर मास्टर क्लास इन आईसीआई की ले रहे हैं। ही इज ऑल्सो ए क्वालिफाइड पीयर रिव्यू ऑफ आईसीआई। ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी फ्रॉम द आसाम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑन द थीसिस टाइटल इम्पैक्ट ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडी एएस ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेलेक्टेड इंडियन कंपनीज। He has secured third rank in accounting honors in Guwahati University in 2005. तो हमारे पास इतने एक्सपीरियंस और इतने नॉलेजेबल स्पीकर हैं। Presently, he is serving as a member of the Regional Direct Tax Advisory Committee of Assam, Arunachal Pradesh, and Nagaland. He has been the former member of governing body of Indian Institute of Technology, IIT Guwahati. Technology Incumbent Center and also member of Technology Development Board Management Committee of IIT Guwahati. He has been past chairman of Guwahati branch of Eastern India Regional Council of ICAI for 2021-22. He has co-opted member of Continuing Professional Education Committee of ICAI. New Delhi for 2022-23. He is also visiting faculty at Tezpur University, Assam Institute of Management, Northern Eastern Regional Institute of Management. He is also published research paper in UGC Care Journal and international conferences. ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है कि घर बैठे इनको सुनने मिल रहा है। सर हम लोग शुरू कर सकते हैं सर। Thank you so much, Ashok ji, and my gratitude to the entire team of Eastern India Regional Council, led by Vishnu Tulsiyan ji, and of course this wonderful team, जिन्होंने ये बहुत अच्छा एक initiative start किया है Golden Charcha. I keep on following this message every week में हम लोग कुछ ना कुछ relevant topics के ऊपर discussion करते हैं, and today in this series we are going to discuss on the standards on auditing, the SS 700 series. So this 700 series is basically related to audit report. Audit report में हम जब audit report बनाते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, and what are the precautions we should take when we are finalizing our audit report so that we do not commit any kind of mistake. अशोक जी, आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। हाँ कमल जी, एकदम दिख रही है ना? जी जी, वेलकम चिंपू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, थैंक यू और जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर SS 700 सीरीज। वैसे तो 700 सीरीज में देर आर 6 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, but because we have a small duration of 1 hour session only, so I'll try to cover only 2 or 3 of them जो ज्यादा relevant है हमारे लिए, with some practical ideas and practical insights कि किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए. So our broad agenda is how to read an audit report, the linkages to the standards on audit. ये हमारा broad subject है आज का. एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात से शुरू करते हैं अशोक जी। उन्होंने कहा था एक बार कि यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ द गेम and then you have to play better than anyone else. So this is equally applicable in our CA profession, because our CA profession is such which is ever dynamic, ever changing. Every day we see a lot of new circulars in GST. income tax बदल रहा है। हमने 1961 income tax act पढ़ा था जब हम CA बने थे। Today we have 2025 act, and a lot of changes are happening globally everywhere in our profession. So as chartered accountants, we have to learn the rules of the game. We have to learn the changes. We have to understand the developments which are happening across the globe, across the country. The government of India is watching us. The regulators are watching us. So one have to be very careful when we are signing off and discharging our attest functions. The standards on audit जो मैंने बताया आपको SS 700 series, there are basically 6 standards.
700, 701, 705, 706, 710 or 720. So these entire 6 standards on audit talk about how to prepare an audit report. और जब हम audit report बनाते हैं तो उस audit report में what are the precautions we need to take. So these are the primary 6 important standards which we have to cover and which we have to keep in our mind. जो 700 स्टैंडर्ड है, दिस इज द मास्टर स्टैंडर्ड, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड यही है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो जब हम कोई भी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो हमको ऐसे 700 फॉलो करना चाहिए. ना बहुत बार क्या होता है कि जैसे हमने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का रिपोर्ट बनाया या कोई अदर देन कंपनी का ऑडिट किया, हमने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का ऑडिट किया, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो चाहे पार्टनरशिप हो, यूजुअली कोई ऑडिट रिपोर्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिकॉज वी डू द टैक्स ऑडिट, जहां पर कोई सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है. But अगर आपको if there is any bank or any financial institution which asks you to prepare a report to give an independent auditor's report, then it has to follow the format given in SA 700. You cannot deviate from this 700 format. We'll discuss about the 700 format. 705 talks about modification. So if you want to issue a qualified opinion or adverse opinion or a disclaimer of opinion, अगर इस तरह का कोई अगर आपको ऑब्जर्वेशन डालना है, ओपिनियन अपना मॉडिफाई करना है, देन यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ SA 705. 706 talks about emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. We will discuss what is emphasis of matter and what is other matters and how to take care when we are finalizing our audit report with these 2 paragraphs. 701 is communicating key audit matters in the independent auditor's report. Now this 701 is applicable only for listed entities. So if you are doing the audit of a listed entity, then SA 701 is mandatory for you. For other audits, it is not mandatory, but if the practicing CA firm determines that they want to include SA 701 key audit matters in their report, they can do so voluntarily. So mandatory for listed entities, and for other entities, it is up to the practitioner to decide whether to include or not to include key audit matters. Then we have SA 710, comparative information, corresponding figures and comparative financial statements. एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, SA 710 का इंपॉर्टेंस कहाँ होता है? देखिए, when we prepare the audit report, suppose I am appointed as an auditor for the first time and my previous year auditor was, suppose Ashok ji मेरे previous year के auditor थे, suppose मैं मान लेता हूँ, I'm just assuming that Ashok Agarwal ji was the last year auditor and this year I am appointed as auditor, right? So when I am preparing my audit report, I have to explicitly mention in my other information paragraph that the previous year audit was conducted by another CA firm who have given their audit report dated so and so. I don't have to mention the name of the CA firm, but I have to make this statement in my audit report that the previous year figures were audited by another CA firm, another predecessor auditor, and they have given their opinion white so and so report dated. So audit report का date मुझे बताना पड़ेगा, and I don't have to mention the name of the CA firm, but this statement has to be there. And many of us make this mistake when we prepare this report, right? We normally do not. We normally forget to mention this fact that we are the first time auditors and previous year it was done by somebody else. Especially when you are going for statutory bank branch audit, this should be taken care of because bank branch audit is something which keeps on rotation and you normally do not get the same branch for the next year. So in those situations, one has to be very careful that when we are preparing our audit report, we should give this statement. And the last one is SA 720, which is related to other information in the auditor's report. So these are the 6 important standards which covers the entire structure of the audit report. Today, I'll talk more on SA 700, 705 and 706 because these are the more important standards. So, सबसे पहले, how many types of audit reports are there? There are 2 types of audit report. One is unmodified, or normally we call it unqualified audit report. Unqualified means it's a clean audit report. So when you are giving a clean audit report, we have to follow 700 SA 700. It is written on my screen 700R because it was revised in 2018. So I'll use 700 only. So if you are giving a clean or an unqualified or an unmodified report, we have to follow SA 700. In case we want to give a modified opinion, modified का मतलब अगर आपको qualify करना है अपना audit report, then we have to follow 705. Now 705 covers 3 types of modification: qualified, adverse, or disclaimer. Then what is 706?
सी 705 एंड 706 गो हैंड इन हैंड. हम बोलते हैं इनको, हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं इसको. Because 705 talks about modifications, matters which affect auditor's opinion. So when you are giving 705, that is when you are saying that this is a qualified report or an adverse report or a disclaimer of opinion, then basically you are saying that there is something wrong which you are bringing to the notice of the users of financial statements, right? But 706 talks about matters that do not affect auditor's opinion. For example, there may be any information in the financial statement which you just want to highlight. It does not mean that something is wrong. मान लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है या कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि शेयर होल्डर्स शुड बी, इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द users of financial statement. You want to highlight something. It may be informatory in nature. Then we have to use 706. Now 706 gives you two options: emphasis of matter or other matter. We'll talk about it. We'll talk about it. What is emphasis of matter and what is other matter. So basically, summary में अगर बात करें, if we summarize this, 705 is regarding any negative findings in the audit report. So it could be qualified, it could be adverse, it could be disclaimer. उसके भी rules हैं कि आपको qualified कब देना है, adverse कब देना है, disclaimer कब देना है. कमल And जी, 706 जी सर. कमल जी, मैं थोड़ी सी दो एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ. जी प्लीज जैसे प्लीज. कि आपने ये केंस टेक्नोलॉजी की अभी कुछ सुना था क्या? कुछ सर ऑडिट कौन सी रिपोर्ट कंपनी एक्चुअली की? उन्होंने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं दिया था, इसके लेके हम्म. बहुत हंगामा हुआ था. तो ये क्या ओके. मैटर या आपका 706 में जाना चाहिए था कि 705 में जाना चाहिए था ये? 705 में जाएगा सर. रीजन बीइंग, अगर उन्होंने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं दिया है, दैट हाँ. मींस इफ दे हैव नॉट गिवन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, इसका मतलब उन्होंने ना एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो नहीं किया. बिकॉज ओके. रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी एज पर शेड्यूल 3 एज वेल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो ओके. अगर आपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डेविएट किया है या अगर आपने शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं किया, जो हमारा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, हाँ, तो एप्लीकेबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके रिपोर्टिंग. लिए क्लेरिफिकेशन दिया था कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, उनके सब्सिडरी नहीं के नहीं नहीं, तब तभी किसी ऑडिटर एक विल गो फॉर. सब्सिडरी ने मिस्टेक किया है. तो हाँ इसके लिए फिर शेयर मार्केट में मोर देन 50% उनको पनिश किया गया, प्राइस करेक्ट. तो डाउन. वो ऑडिटर हैज टू इशू 705. वो 706 में नहीं जाएगा. बिकॉज ओके. 706 इज बेसिकली समथिंग which we want to bring, highlight something which is informatory in nature. और ओके. ये एक 706 का रिक्वायरमेंट भी है कि when you are giving a 706, that means when you are giving an emphasis of matter and or other matter paragraph, तो आपको साथ में लिखना पड़ेगा उसमें नीचे, our opinion is not modified because of this. ओके. तो आप 706 में बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हो यूजर्स को कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं. नाउ आप जो एग्जांपल दे रहे हैं सर, उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर्स नहीं दिया है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और शेड्यूल 3 का वायलेशन है. तो इसमें वो 706 नहीं दे सकते. दे हैव टू मैंडेटरीली गिव 705. ओके. मैंने देखी नहीं है रिपोर्ट, सो आई कैन नॉट कमेंट, बट दे मस्ट हैव गिवन क्वालिफाइड ओपिनियन इन दैट केस. तो हम आगे बढ़ते हैं. सो हाँ बेसिकली सर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड, 705 एंड 706. So 70 जो आया, 700 जो आया, दिस इज बेसिकली फॉर ऑडिट पीरियड्स बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018. 2018 से पहले भी 700 था, बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था. सो विल नॉट डिस्कस दैट बिकॉज इट इज एन ओल्ड स्टोरी नाउ. So it was revised in 2018. So now we are following the revised standard since 2018. Uh, yeah. So this पुराने स्टैंडर्ड में और नए स्टैंडर्ड में क्या चेंजेस आए हैं? तो बेसिकली द फ्लो ऑफ रिपोर्टिंग, जो स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का, कौन सा पैराग्राफ ऊपर आएगा, कौन सा पैराग्राफ नीचे आएगा, दैट स्ट्रक्चर हैज बेसिकली चेंज्ड इन द न्यू रिवाइज्ड एसए 700. And it is applicable for all the audits which is starting on or after 1st April 2018. Now मान लीजिए कि if you are doing any audit of 2015 or 2016 or 2017, then also you have to follow revised standard. You cannot go to the old standard now. So broadly इस पूरे स्टैंडर्ड में जो एक हमारा क्लीन रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, that there is no observation or there is no negative remarks, how to present, what should be the structure. और पहले उसमें हम ये समझेंगे कि ऑन व्हाट सिचुएशन कैन यू गिव अ क्लीन रिपोर्ट. तो सर आपका जो क्वेश्चन था वो उसी के साथ आंसर करता हूं इसमें. देखिए सर, पहला सिचुएशन होना चाहिए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. आपका कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का या कोई भी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का वायोलेशन नहीं होना चाहिए. तो इफ समथिंग इज मेंशन इन शेड्यूल 3
that has to be followed. If something is mentioned in accounting standard, that has to be followed. If you have violated any of the accounting standard or any of the provision of schedule 3 or etc, या आपने मान लीजिए कि जो फॉर्मेट एप्लीकेबल है वो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनाया है, then it is a violation of applicable financial reporting framework. In that case, आप क्लीन रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते. नंबर 1. Number 2, the auditor has obtained reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. सर एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन होता है, हम लोग सोचते हैं कि मिस स्टेटमेंट का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती है, एरिथमेटिकल मिस्टेक या कोई मतलब फिगर की गलती है. Misstatement does not include only arithmetical errors. It also include any gaps in your presentation, classification or disclosure. So कोई चीज आपको जैसे प्रेजेंट करनी थी, अगर आपने वैसे प्रेजेंट नहीं किए, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट. आपको कुछ डिस्क्लोज करना था, आपने नहीं किया, दैट इज अ मिस स्टेटमेंट. आपको कुछ क्लासिफिकेशन सही करना था, फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म कर दिया या लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म कर दिया, जो भी हमारे करंट लाइबिलिटीज वगैरह में हम रिपोर्ट करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट. तो अगर कुछ क्लासिफिकेशन गलती भी है, उसके लिए भी आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गिव अ क्लीन रिपोर्ट. सो क्लीन रिपोर्ट आप तभी दे सकते हैं जब आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज कंप्लीटली फॉलोड, there is no misstatement, and the last one, uncorrected misstatements are not material either individually or in aggregate. तो कई बार क्या होता है कि सर वी कम अक्रॉस सम स्मॉल मिस्टेक. सो आज मेरा कोई आर्टिकल ऑडिट पे गया, वो मुझे लाके बोला कि सर वी हैव फाउंड सम स्मॉल मिस्टेक, सो 200 500 600 का गलती है. तो मैं बोलता हूँ कि भाई छोटा मोटा मिस्टेक है, छोड़ दो. नॉर्मली हम लोग यही बोलते हैं, छोटा मोटा मिस्टेक है, इसकी वजह से हम रिपोर्ट में ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे. तो दैट इज इंडिविजुअली इट इज नॉट मटेरियल. लेकिन अगर आप वैसे छोटे छोटे 10 मिस्टेक देखोगे एंड कलेक्टिवली इफ इट बिकम्स मटेरियल, देन वी हैव टू गिव अ मॉडिफाइड रिपोर्ट. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स वेयर द ऑडिटर हैज टू कंसीडर कि सबसे पहले कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में गलती नहीं है, सारा आपको देयर इज नो मिस स्टेटमेंट्स, और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है उसको अगर हम जोड़ भी लें, सबको एग्रीगेट भी कर लें, सो दैट इज नॉट मटेरियल. सो वंस these 3 conditions are satisfied, then we can give a clean report. So next time whenever you issue a clean report, just ask these 3 questions to yourself, that whether these 3 conditions are satisfied or not. इसमें से कोई भी condition अगर satisfied नहीं है तो we have to go for a modification. Now yeah, that's exactly what I've said. You just, if any of the condition is not satisfied, then we have to go for a modification. Now what is the flow of report? So many a times we make mistake कि कोई पैराग्राफ ऊपर लगा दिया, कोई पैराग्राफ नीचे लगा दिया. तो लेट अस क्विकली सी दैट व्हाट शुड बी द क्रोनोलॉजी, कि कौन सा पैराग्राफ पहले आना चाहिए और कौन सा पैराग्राफ उसके बाद में आना चाहिए. सो माय फर्स्ट पैराग्राफ इज टाइटल. सो हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, सो दैट इज माय टाइटल. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट. एड्रेसिंग टू द मेंबर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी और टू द डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सो एंड सो. जब हम लिमिटेड रिव्यू देते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं. जब हम एनुअल ऑडिट बनाते हैं एनुअल की, तो हम मेंबर्स को एड्रेस करते हैं. सो इट हैज टू बी एड्रेस्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. उसके बाद सबसे पहला पैराग्राफ जो आएगा, ये तो चलो हमारे हेडिंग हो गया, ऊपर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन टू द मेंबर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी. देन माय फर्स्ट पैराग्राफ पर से वुड बी ओपिनियन. इसको हम बोलेंगे ओपिनियन. आई हैव यूज्ड द वर्ड ऑडिटर्स ओपिनियन, बट इट शुड बी ओपिनियन. ओपिनियन पैराग्राफ, सबसे पहला पैराग्राफ. पैराग्राफ ओपिनियन के नीचे आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन. नाउ मान लीजिए कि आपने अगर क्वालिफाइड ओपिनियन इशू किया है, आपको कुछ गलती मिली और आप बोल रहे हैं कि मैं क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू करूंगा. सो ओपिनियन वर्ड विल बिकम एडवर्स ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड बेसिस ऑफ ओपिनियन विल बिकम बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन या बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन. आपको बताना पड़ेगा कि क्यों वो क्वालिफाइड है. उसके नीचे आएगा हमारा गोइंग कंसर्न. सो मान लीजिए गोइंग कंसर्न इज नॉट मैंडेटरी बाय द वे. अगर आपकी कंपनी या आपका ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है, यू फील दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू सस्टेन इन द नेक्स्ट 12 months टाइम, उसका बिजनेस बंद हो सकता है, देन यू हैव टू मेंशन अ सेपरेट पैराग्राफ, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न. So this paragraph is to be given only if you feel that there is a material uncertainty related to going concern. अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस अच्छा चलेगा, सब कुछ ठीक है, तो ये पैराग्राफ देना जरूरी नहीं है, देने की जरूरत नहीं है. इसके नीचे आएगा की ऑडिट मैटर. नाउ की ऑडिट मैटर, एज आई टोल्ड यू, इज मैंडेटरी ओनली फॉर listed companies. I have seen a number of audit reports where people give key audit matters and they mention that it is not applicable because our company is not a listed company. Don't give, not required. आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल नहीं है तो झूठ मूठ का आप एक पैराग्राफ देके उसके नीचे लिख देते हैं कि इट इज नॉट एप्लीकेबल, हेंस वी आर नॉट रिपोर्टिंग. नो नीड टू गिव.
If it is not applicable, don't give, right? No need to include it unnecessary. So many reports I see where this key audit matter is there, और उसमें कुछ लिखा भी नहीं होता है, उसमें लिखा होता है कि it is not applicable for us. So basically a copy paste exercise. So let's avoid doing that. Next इसके नीचे आएगा emphasis of matter. Now emphasis of matter को लेके there is a ambiguity. So I'll tell an example. In one of the audit, what happened that it was a government company. So we submitted our audit report. And once we submitted our audit report, so there was, because in government company, what happens, your audit report goes to the CNAG office and they come for a supplementary audit. So once we submitted our audit report, the CNAG team came and they verified our audit report and the entire financial statements. There was a query raised by the CNAG. In our case, the emphasis of matter paragraph was above the key audit matter paragraph. मतलब हमने पहले emphasis of matter paragraph डाला, उसके बाद key audit matter paragraph. And the CAG team said that, look, your standard says that first it should be key audit matter, then it should be emphasis of matter. So going by that logic, your report is not proper. The guidance note, the implementation guide of ICAI clearly specifies that it is based on the auditor's judgment. अगर auditor को लगता है, if the auditor feels that emphasis of matter is more important than key audit matter, then he can swap the positions. So I can include emphasis of matter either before key audit matter or after key audit matter. It is up to the judgment of the auditor. So that was the reply we gave to them, that based on our understanding and our professional judgment, we feel that emphasis of matter was more important than key audit matter. So we have included it before key audit matter. So that both the treatment is permissible. After this, by the way, if you don't have any emphasis of matter, please don't give, right? It is just a sequence I am discussing. In case there is no emphasis of matter, there is no need to give any emphasis of matter paragraph in your audit report. And then comes your management responsibility. उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अदर इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कुछ है अदर इंफॉर्मेशन देने तो ही दीजिए, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है. रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स विच वी सी दैट हम जो देते हैं उसमें डायरेक्टर्स को डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिट ट्रेल, रूल 11G के जो सारे अदर मैटर्स है, कारो रिपोर्टिंग एक्सेट्रा, ऑल दिस विल कम अंडर अदर लीगल एंड रेगुलेटरी मैटर्स. उसके नीचे होता है सिग्नेचर ब्लॉक विद UDIN नंबर, और लास्ट में प्लेस एंड डेट ऑफ साइनिंग. So just try to see the sequence. This is the broad sequence, and I would always suggest that once you prepare an audit report, please ensure that this sequence, the chronology of the paragraph is maintained, because most of us commit mistakes. We have seen that sometimes the management responsibility goes in the end, legal matters come in the top. That is incorrect. So please follow this sequence. That is the whole idea of having this discussion on SS 700. So अगर tabular format में बात करें, so these are the all paragraphs which or elements of the audit report SS 700. So this was a short discussion on SS 700. I have not gone into the details because I understand that in 1 hour I need to cover a lot of other topics as well. So now quickly go to 705, modifications in audit report. जैसा मैंने आपको पहले बताया, 3 तरह का मॉडिफिकेशन होता है: क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन or disclaimer of opinion. Now, before we discuss these 3 different types of audit opinion, we have to understand meaning of a simple word that's called pervasiveness. In the last line of my slide, you have seen there's a word called pervasiveness. Pervasiveness, अशोक जी, अगर हम बात करें, हम जिसको बोलते हैं कि जो वो चीज जो हर जगह व्यापक रूप से उपस्थित हो, जो सब जगह मौजूद हो, उसको हम बोलेंगे pervasiveness. So, for example, I have a financial statement. And in my financial statement, there is some misstatement. कुछ गलती है उसमें. There is some, adverse findings. And the nature of the adverse finding is such that it affects the financial statements as a whole. So if something affects your financial statement as a whole, then it is called pervasive. If it does not affect the financial statement as a whole, it affects only one portion of the financial statement, then it is called non-pervasive. तो आपको ये देखना है कि आपने जो मिस्टेक्स फाइंड आउट की हैं, आपने जो गलतियां निकाली हैं, आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या वो परवेजिव है या नहीं है. अगर आप ये समझ जाएं कि वो परवेजिव है या नहीं है, देन योर जॉब इज वेरी सिंपल, राइट. सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द ऑब्जर्वेशंस और द एडवर्स रिमार्क्स व्हिच यू हैव पॉइंटेड आउट इन द ऑडिट, whether they are pervasive in nature or not pervasive in nature. Now, why it is important? क्वालिफाइड हम कब देंगे? मान लीजिए
कि I have unable to obtain sufficient and appropriate evidence. मुझे evidence नहीं मिला, या evidence मिला भी, whatever. And I found that the effect of this, इसका जो effect है, it could be material but not pervasive. मुझे कुछ गलतियां मिली, और उन गलतियों को देखने के बाद I realized that these mistakes are material but they are not pervasive. They are not going to affect my financial statements as a whole. In that case, I'll go for qualified opinion. So हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या एडवर्स ओपिनियन देना है या डिस्क्लेमर देना है. क्वालिफाइड आपको तब देना है जब गलती है, मटीरियल है, लेकिन परवेसिव नहीं है. इट इज नॉट अफेक्टिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. सो मैं एक तरह से बोलूं तो इट इज अ लाइटर पनिशमेंट, आई कैन से. ये हल्का पनिशमेंट है फ्रॉम द ऑडिटर टू द मैनेजमेंट, राइट? नाउ एडवर्स कब देंगे? सम हेवियर पनिशमेंट when you feel that, when in your judgment the misstatements are both material and pervasive. पिछली बार मैंने कहा था कि मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं था, पूरा व्यापक रूप से मेरे बैलेंस शीट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, then it is qualified. In this time it is both material and pervasive, meaning that it is affecting my entire financial statements, then I have to give an adverse opinion. And the last one, it is very rare, I can tell you. अशोक जी, मैं 17-18 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस में, and in my entire 17 years of career I have found only one audit report. I have signed that audit report which was a disclaimer of opinion. एक कोई सरकारी कंपनी थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, एंड द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड इन पेंसिल. अब आप समझ जाइए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर पेंसिल से लिखे हुए हैं, तो मैंने बोला कि ये फिगर मैच नहीं कर रहा है, तो अकाउंटेंट ने मुझे बोला कि इसको रबर से मिटा देते हैं, ही इरेज्ड इट बाय रबर, फिगर को चेंज कर दिया. So that was the situation, and I was not able to obtain any evidence, right? And because of that, mistakes or misstatements, there were uncertainties. मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसमें क्या होगा. When everything is under, what do you call it? The impact of those उस एरिया में uncertainties. क्या हम उनको अकाउंट्स को रीराइट करने या रिप्रोड्यूस करने नहीं बोल सकते हैं? सर देखिए, अगर हम अगर प्राइवेट क्लाइंट पेंसिल की से बात लिखी हुई अगर उसको हम कॉपी करते हैं तो सर वो तो फिर कॉपी तो मिटेगी नहीं ना. वो हमने कर दिया, मान लीजिए, हाँ. लेकिन बट दैट इटसेल्फ द इंटीग्रिटी ऑफ द अकाउंट्स इज लॉस्ट. My concern was that the integrity of the accounts itself was lost. अकाउंट्स पेंसिल से लिखे हुए, वो इरेज करके उसको ठीक कर रहा है, तो उससे ये पता चल रहा है कि अकाउंट्स की इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है, आप उससे रिलाई नहीं कर सकते. एंड देयर वाज नो एविडेंस अवेलेबल. मैंने जो भी कागज मांगे वो कागज नहीं दे पाया. एंड उससे मुझे ये समझ में आया कि दिस एंटायर मिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली मटीरियल बट ऑल्सो परवेसिव, एंड इट इज I am not able to obtain even evidence as well. So in that case I had to issue a disclaimer of opinion. तो अगर हम इसको समराइज करें तो कुछ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं. सबसे पहले, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, लेकिन मटेरियली मिसस्टेटेड है बट परवेसिव नहीं है, तो हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, राइट? I'll go it like this. Material but not pervasive, give a qualified opinion. Second, material and pervasive, give an adverse opinion. If you are not able to obtain evidence, आपको evidence नहीं मिला, आपने 10 आइटम चेक किए, you verified 10 items, and out of 10 items you could get the evidence for 8 items, and you could not get the evidence for 2 items. Now for the remaining 2 items you feel that it is material but it is still not pervasive. Material है लेकिन pervasive नहीं है, go for a qualified opinion. Last scenario जो मेरे साथ हुआ, in my case I was not able to obtain evidence for most of the items, and I concluded that since I am not able to get evidence for most of the items, it is material as well as both pervasive. Hence, I have to give a disclaimer of opinion. So, disclaimer is to be given in a rare circumstances when you are not able to obtain evidence, and because you are not able to obtain evidence, you feel on your professional judgment that because of this not able to obtain evidence, the misstatement is both material and pervasive. Then you go for a disclaimer of opinion. Now example, जैसे कि हम inability to obtain evidence कब हो सकता है हमारा? Circumstances which are beyond the control of the entity, like books of accounts, income tax की रेड हुई, GST की रेड हुई, and books of accounts are seized by the authorities. SEC बोल रहा है कि हमारे पास books of accounts ही नहीं है, आपको जो लिखना है लिख दीजिए. Circumstances which relates to the nature or timing of the auditor's work. For example, there is a period when the auditor is not able to observe the physical verification.
तो 31 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए या हम उसका कुछ वेरीफाई नहीं कर पाए। लिमिटेशन इम्पोज बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम आपको इस लोकेशन पे विजिट करने का परमिशन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, सेफ्टी रीजन है, या मैनेजमेंट इज नॉट एबल टू ब्रिंग टू यू द बैलेंस कंफर्मेशन फ्रॉम योर थर्ड पार्टीज एक्सेट्रा। कभी कभी हो सकता है कि मैनेजमेंट ये सब लिमिटेशन आपके ऊपर इम्पोज करे। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैनेजमेंट इम्पोजेस एनी लिमिटेशंस, शुड आई इमीडिएटली गो फॉर अ क्वालिफाइड ओपिनियन और अ एडवर्स और डिस्क्लेमर? आंसर इज नो। माय फर्स्ट स्टेप शुड बी टू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। If the management is still not agreeing to my request, then I will have to follow certain additional procedures. कुछ alternative procedures follow करने चाहिए मुझे। Even after following the additional procedures, I am not able to resolve the difficulties or resolve the limitation. Then I will have to go for a modification in my audit report. Modification means either qualified or adverse or disclaimer. एक छोटा सा गलती कभी मत करिएगा। Never make this mistake. Whatever decision you take, whatever you decide to give a qualified adverse or disclaimer, you have to first communicate it to those charged with governance. It could be your audit committee, it could be your board of directors, it could be management. उनको सर यहाँ बताना पर मैं पड़ेगा। जी प्रैक्टिकल जो कि हम लोग सभी को फेस करते हैं सर, जनरली हम लोग सभी को बैंक ऑडिट पे जाते हैं। राइट। और आज आप देख रहे हैं कि उनकी जो ऑडिट है वो मैक्सिमम बोलेंगे सिस्टम से ही करने का। पहले तो यूजर आईडी पासवर्ड देने में झुलाएंगे सर, और उसके बाद उनका जो सिस्टम है सर उसमें आप आज के डेट में ऑडिट टूल्स बहुत से आ गए हैं, प्लस एआई यूज करके आप बहुत तरह के फिल्टर मार के ऑडिट के एविडेंस निकाल सकते हैं, लेकिन वो राइट। कोई भी टूल्स आपको अपने सिस्टम में नहीं करने देंगे। और वहां करेक्ट। से आपको रिपोर्ट भी बोलेंगे नहीं, इस फॉर्मेट में निकलेगा ही नहीं आपको। तो उस एरिया में जो कि जैसे कि इस बार मैंने फेस किया एसबीआई में, मैं चाह के काम बहुत अच्छे से कर सकता था, मैं काफी एआई टूल्स वगैरह यूज करता हूं, लेकिन किसी को भी मैं यूज नहीं कर पा रहा था। तो फ्यूचर के लिए मेरे को, हम लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए? सर देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि पहले तो आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिए। जो मुझे समझ में आ रहा है कि बैंक ऑडिट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ असाइनमेंट, जहां पर हम्म। आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, वो आपको बोलेगा कि अब 9 तारीख या 10 तारीख के अंदर में रिपोर्ट साइन करके दीजिए। और सो वो दैट देगा इज नहीं, किसी तरह से आपको एसेस नहीं देगा। नहीं देगा। हाँ। Second step is that you should consider applying for additional audit procedures. Now, हाँ। additional audit procedures मतलब आप अगर कुछ दूसरे तरीके से डेटा को, if you can capture the data or you can bring the data in your laptop and in your computer and then do the analysis, if that is possible, that is step number 2. उसके बाद भी अगर आपका कुछ डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं निकल रहा है, then you have to go for a modification. Especially what happens in case of banks, sir, अगर आप modification करते हैं, qualified opinion देते हैं, the moment you think of giving a qualification in the audit report, you get a phone call from the higher authorities requesting you that sir kindly modification मत दीजिए, we'll try to see कि किस तरीके से हम आपको डेटा प्रोवाइड कर सके एक्सेट्रा। हम्म। बट इन नॉर्मल केस, अगर आप किसी कंपनी में या अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कर रहे हैं, एंड इफ यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर एनी रीजन, then the हम्म। first thing is that you have to communicate it to the management. Management को बता के करना होगा that we are proposing to give a modification and this is the reason. And the reason for giving this modification is that we have followed the alternative audit procedures, and based on alternative audit procedures हम इसको conclude नहीं कर पा रहे हैं, and that is the reason we are going to give a modification. बैंक को कैसे टैकल करे सर? बैंक के बैंक लिए के एक केस बार में तो sir, what we normally do is that whatever limitation we face, we give हम्म। it in the long form audit report. जो LFAR होता है हमारा, हम उसमें मेंशन हाँ। कर देते हैं। आप अगर आप बोलेंगे कि सर LFAR में कहाँ मेंशन करें, तो आप देखिएगा LFAR का जो लास्ट क्वेश्चन होता है, अदर जगह रहती है सर एक। अदर, हाँ, अदर मैटर्स, उसमें जाके आप हाँ। मेंशन कर दीजिए। हाँ। एटलीस्ट दैट विल रिजॉल्व यू फ्रॉम योर लाइबिलिटी एज एन ऑडिटर। सो हम्म। टुमारो नोबडी कैन कम एंड टेल यू दैट आपने इसको मतलब हाईलाइट क्यों नहीं किया। हम्म। Second thing, always ensure that you have a thorough dialogue with your central statutory auditor. Because if you are doing the branch auditor, आपका कोई ना कोई central auditor होगा. At least highlight this issue to the central auditor and tell them that, look, we have found this kind of mistake or this kind of limitation, and we are going to put it in our long form audit report. So you can always make a formal communication to the central auditor requesting them to appropriately cover it in the head office report. अब वो सेंट्रल ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा सर कि वो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको कितना कंसिडर करता है, नहीं करता। बट एटलीस्ट एज एज ऑडिटर ऑफ द ब्रांच, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, आपकी लाइबिलिटी इज रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। लास्ट रिजॉर्ट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मली आई हैव नॉट सीन पीपल डूइंग इट, बट यू कैन थिंक ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम द असाइनमेंट। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा असाइनमेंट रिस्क है, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द बैंक ऑडिट परस्पेक्टिव,
maybe some other audit you're going for some kind of other statutory audit, and there is a lot of limitation imposed by the management, और आपने those charged with governance को communicate भी कर दिया है, still it is not resolved, then you may consider resigning from the particular assignment, and uh, also yeah, either you think of resigning from the assignment or you can give a disclaimer of opinion. But again, अगर आप resign भी करते हैं, then you have to, inform those charged with governance that why you are resigning. So this is the entire structure of your 705 and 700 and 705. Quickly, in the next 5 minutes, we'll take up 706, which talks about emphasis of matter paragraph and other matter paragraph. So normally what we see that there are a lot of audit reports where you will find that if there are some small or minor observations, people report it in emphasis of matter. और उनको लगता है कि हमने emphasis of matter में report कर दिया, तो our liability is reduced. It is not so. Emphasis of matter paragraph is a paragraph in the audit report, and emphasis of matter में आप वही चीजें डाल सकते हैं. You can bring only those matters in emphasis of matter paragraph, which are already disclosed by the management in their notes to accounts. If the management has already disclosed something in their notes to account, that can be brought to your emphasis of matter paragraph. Never make this mistake. Do not bring anything out of syllabus in your audit report through emphasis of matter. Emphasis of matter में वही आएगा जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रखा है. अगर आपको कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन देना है जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है, तो आप उसको अदर मैटर पैराग्राफ में डाल सकते हैं. Don't put it in EOM. So EOM and other matter, these are two separate paragraphs. EOM is to be used for something which is already disclosed by the management, and other matter is to be used when something is not disclosed by the management. This is the difference between both the paragraph, and both of them are covered in 706, SS 706. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका पोजिशनिंग. Yeah. Now there are some short एक दो FAQs हम डिस्कस करते हैं which are there in the implementation guide of ICAI. बहुत अच्छा, it's a very beautiful publication which the institute has prepared covering the 700, 705 and 706. I'll just take a couple of 2 or 3 questions from there. It was issued in 2018 edition. ये मैं already discuss कर चुका हूँ कि after 2018 की report के लिए applicable होगा. Next, is it necessary that an auditor's report should follow a particular form and style? The answer is yes. अगर कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है, so there may be certain organizations, certain entities where you have to follow a prescribed reporting format given by the entity. If no format is prescribed, you have to follow SA 700, right? You cannot deviate from SA 700. Is key audit matter compulsory? Answer is no. Key audit matter is applicable only for listed entities. For other entities, it is up to the auditor to decide. They can include a key audit matter on a voluntary basis. But please, if अगर आपके ऊपर applicable नहीं है, तो झूठ मूठ का उसको मत डालिएगा उसमें. There is another implementation guide on 706. We'll take few questions from there. There is a misconception that if I've included something in emphasis of matter, that means my report is modified. Answer is no. Again, I tell you, emphasis of matter means something which you are bringing to the knowledge of the shareholders, which you are highlighting. It is informatory in nature. It is not observation. It is not qualification. So these are some of the pointers which I wanted to share. I think I am well within my time. So I've kept last 5 minutes for the questions. So if any participant has got any questions, we have just tried to cover few pointers. I have not covered the entire standard because अशोक जी, जब हम लोग इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में जब ये स्टैंडर्ड्स डिस्कस करते हैं तो नॉर्मली वी टेक 2 to 3 hours for covering each and every. But since it is a structure of the golden Charcha structure is like that, we are just putting it in a very short 1 hour discussion. So I've just tried to highlight the important areas. उसमें भी सर आपने गागर में सागर भरा है सर. काफी नहीं सर, इन्फॉर्मेशन दरकार थी, आपने बहुत रिलीवेंट और बहुत सही तरीके से उसको प्रेजेंट किया है. I've tried to cover most of the points. If any participant has got any questions, screen को unshare कर दे तो yeah. So if any participant has got any questions, you may please unmute yourself or you can write it in the chat box. I'll try my best to answer the queries.
Is there any question from participation? Amit ji ने लिखा है सब. Yeah, हाँ. thanks a lot for your comprehensive and lucid information. It would be, yeah, I'll share this PPT to EIRC office, and accordingly they will circulate it for the participants. I think Mour ji, there is no question from participation. Yeah. आपको अगर कोई 2-3 मिनट और कुछ डिस्कस करना हो, 5 मिनट तो आप कर सकते हो, कोई शेयर करना हो कुछ. My only suggestion and only request to all the participants and all the members in general is that please be very careful when you are giving your opinion in the audit report, right? Because audit report is the ultimate deliverable. हम बैलेंस शीट साइन कर रहे हैं, बैलेंस शीट financial statements are actually prepared by the management in the true sense. We are just reviewing it. But whatever is the findings we are giving in our audit report, and our audit report is our ultimate deliverable. So it's a humble suggestion to all the participants and all the members in large is that please follow SS 700 series के जो भी standards है, please follow them meticulously when you are signing any audit report, because ultimately it is the audit report which is your auditor's opinion, which is the tool of the auditors. So one has to be very careful. Do not sign any audit report in a hurry. Follow the standards to the best of your understanding. And whenever you feel there is any question or inquiry, you can always refer to the institute publication. Institute has done very good work. They have come out with a lot of implementation guides. In fact, whenever there is a program, there is a seminar, I always go through the guide once, जाने से पहले कि भाई अगर कुछ नया मिल जाएगा guide में से. So every time you read the FAQs, you will find something on other which is जो आपको याद नहीं होगा, जो आप भूल गए हैं, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा. So do follow the guidelines of the implementation guide and the material of ICAI. थैंक यू मोर जी, आपने Thank अपना you, बिजी sir. शेड्यूल से टाइम निकाला. आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बस थैंक्स बोल रहा था सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और मोरे जी ने काफी शॉर्ट में जो पॉइंट्स थे उसको अच्छी से हाईलाइट किया है. तो थैंक यू कमल मोर जी, आपने अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमको दिया, आपका एक्सपीरियंस शेयर किया. आपने काफी अच्छी गाइडलाइंस बताई क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट में, क्या करना नहीं करना है, क्या क्या जनरली हम मिस्टेक करते हैं, ऑडिटर की क्या जिम्मेवारी आती है, उसको स्ट्रिक्टली क्या क्या चीज फॉलो करना, प्रीवियस ऑडिटर से क्या उसको नोट डालना है, सीक्वेंस जो चेंज हुआ वो चेंज कैसे करना नहीं करना है. तो इसके लिए आपको धन्यवाद. और ये तो टॉपिक 1 घंटे का है नहीं, इसमें और ज्यादा समय लगेगा और Right. ज्यादा डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए हमको. और इस साल का तो ऑडिट पीरियड खत्म हो गया है. कमिंग ईयर के लिए हमारे लिए ये काफी यूजफुल टूल्स है और आगे भी आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपका समय मांगेंगे और भी. और थैंक यू अशोक कुमार अग्रवाल जी फॉर टुडे थैंक यू सर. स्पेशल एड्रेस. आपने भी अपना समय निकाला और आज का प्रोग्राम को सक्सेस किया. थैंक यू पार्टिसिपेटिंग लिसनर, आपने भी ध्यान से मन लगा के सुना है और हमारे जो स्पीकर है उसको समय दिया है. धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद. थैंक यू. Thank you. वी क्लोजिंग टुडेज आवर सेशन.